Ciao ciao दोस्तों, कैसे हो आप लोग? 1000 subscribers हो गए and this was my promise to you that I'm going to deliver. This video is how I became a Roma fan. Well, इस वीडियो के दो हिस्से रहेंगे. एक तो मैं बात करूंगा कि the initial days how I became a Roma fan, and in the second part it's about that pilgrimage that I finally took to go to Rome and see Francesco Totti for one last time. So sit back, relax and enjoy this video. वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप नए हो इस चैनल में तो do consider subscribing to the channel and do have a look at all the content that I've been making, and there's a lot more yet to come. But this one is थोड़ा सा दिल से, because this is about Roma. This is about my journey as a Romanista and how I found out that Roma was the club for me, and eventually when I got there, everything that happened to me. So this is going to take a while. कहाँ से शुरू करें? I think let's start with the early 2000s. Actually, 98 World Cup was probably the first World Cup that I watched on TV. I still remember Ricky Martin, the Cup of Life, which was very famous, and of course the whole controversy with the Brazilian Ronaldo, whether he will play in the final or not. ऐसा मतलब rumors आ रहा था कि शायद he is not keeping well and वो शायद खेलेगा नहीं, but eventually he played. But France won the World Cup in 98. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई with football. उसके पहले obviously I've grown up on a staple of cricket like any 90s kid would do. उस समय पे आप बोलोगे कि 96 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, that was my first actual introduction into sport, and 98 में फुटबॉल वर्ल्ड कप था. उसके बाद यूरोज आया. यूरोज में again the team that probably caught my eye was Italy. Again, it was Italy versus France. France again triumphing in that particular tournament. So उस टीम में आप हम जैसे बोलते हैं कैलाफियोरी का ऑरा है, his long hair, white hair. वो कहाँ से आया? वो आया इस टूर्नामेंट से, यूरो 2000 से, जहाँ पे सारे इटालियंस के लंबे बाल थे, एंड ऑफ कोर्स वो व्हाइट हेडबैंड था. मैंने भी इवेंचुअली once I came into college, I also grew my hair. I also wore that white headband because that was the aura that inspired me and many others actually to support Italian football. And ये उस समय पे तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई मतलब कौन सा प्लेयर कौन है, क्लब्स क्या है वगैरह. प्रीमियर लीग भी चल रहा था उस वक्त, ला लीगा भी चल रहा था उस वक्त. So I think the clubs that I initially saw on television were the likes of Man United. Of course, they were the most popular club. Arsenal with the whole Henry Bergkamp Wenger era. Chelsea under Claudio Ranieri. This is pre the Roman takeover. Liverpool, of course, with Michael Owen being one of the Ballon d'Or winners playing Liverpool के लिए. तो उस वक्त of course Premier League का बहुत ज़्यादा influence था. I would say आज से बहुत ज़्यादा, because आज आपको कई सारे leagues के live streams या broadcast आप देख पाते हैं. Of course internet है. उस वक्त internet काफी slow था, but था, dial up था, modem था. And of course Madrid तो था ही, because Madrid had won the Champions League, and they were absolutely in the Galacticos era. They were buying players like Zidane moved from Juve to Real. Of course Luis Figo also moved from Barcelona to Madrid. तो Madrid का भी एक अलग ये था. But personally speaking मुझे ये clubs के साथ में कोई connection मिला नहीं मुझे. I couldn't find it. I tried. Of course, I watched several games, but couldn't find any connection. This happened actually, you can say, 2002 World Cup के दौर पे, because 2002 World Cup was played in South Korea and Japan. So finally, as 14-15-year-old, उस समय पे 15-year-old, finally there was a window to watch football in normal timings, because obviously उस वक्त late night जाग के मैचेस देखने का परमिशन मिलता नहीं था. तो because the World Cup was held in Asia, the matches were in reasonable times, and that's where I could finally watch Italy again. Again, the same thing. I mean, these players had that aura, long hair, headband and everything, and they played really good football as well. And the one match that actually comes to mind is that infamous Italy South Korea game जहाँ पे Francesco Totti got a red card. And उस वक्त छोटा मुंह बड़ी बात, मेरे को पता था कि वो रेड कार्ड था ही नहीं. The referee Brian Moreno, again उसके बाद में many years later was caught in many scandals that I don't want to discuss here, but in short, he was proven to be a criminal, and of course that match knocked Italy out, and it was quite shocking, sent shockwaves. And that's when I started researching more about Francesco Totti.
उस समय पे PS2 का ज़माना था प्ले स्टेशन में, एंड ऑफ कोर्स फीफा वाज ऑल द रेज, एंड PC था, PS था, वी हैड एक्सेस, लाइक वो एक प्रिविलेज तो था ही, आई कांट डिनाई दैट कि वी केम फ्रॉम दिस प्रिविलेज बैकग्राउंड. उसमें I found out that Totti plays for Roma, and I started taking Roma in every game. And after Francesco Totti, you had Antonio Cassano who came into the fold. He was the next big thing. In fact, मेरा एक Rediff email ID था eventually AJ_Roman Prodigy Cassano 18@rediffmail.com. I mean, just imagine हम लोग ऐसा सब email ID बनाया करते थे, हम millennials, that is. आप अगर Gen Z हो तो this is something that you must not heard of, but this is the truth, that we used to make stupid email IDs which were long ass, and it made no sense back in the day, but that's how it was. But I'm just going a bit ahead. So of course ये PS में I started taking Roma, started to read more about them. Okay, अभी this is like 2002, right? तो थोड़ा internet better हुआ, every information was available. उस समय में before WhatsApp and everything, we had football forums, and that's how I got introduced to Roma, Roma the football club, because football forums में you had fans interacting across the world, speaking about many subjects. तो मैं member बन गया, and उसमें I joined the Roma. It is basically what Reddit is, but in its very nascent form. Like जैसा Reddit है आज के टाइम में, वैसा ही फुटबॉल फोरम्स हुआ करता था, and उसमें मैंने sign up किया, and I got like a custom Roma का signature badge and everything. So started interacting, started reading about Roma's history, and काफी कुछ मतलब pages थे वहाँ पे जो Italian में थे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, but eventually there were some people who translated that also. So after a while I kind of knew that this is a connection, like this is who I'm supposed to follow, this club. And I found that the city is very passionate about its football. The Roma fans in general are very passionate about their team. Francesco Totti was a god on the pitch, man. I mean, थोड़ा बहुत जो मैं देखता था, बिकॉज उस समय तो सारे गेम्स आते नहीं थे. अच्छा ये भी है कि स्टार स्पोर्ट्स ESPN के पास में यू हैड राइट्स फॉर प्रीमियर लीग एंड ला लीगा, बट दे ऑल्सो हैड राइट्स फॉर सेरे A. 10 sports came into the picture. 10 sports took Serie A broadcast. उसमें थोड़े और गेम्स देखने मिले, एंड ऑफ कोर्स ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे उस वक्त चैंपियंस लीग आता था, तो रोमा वर प्लेइंग इन यूरोप एज वेल. आई रिमेंबर वाचिंग Roma Real Madrid game where Real Madrid were 2-0 down. Roma were 2-0 up at the Bernabeu. A young De Rossi and a young Cassano scoring, and उसके बाद में in the second half Real Madrid scored 4 goals and Roma lost that game 4-2. But my point is कि the channels sort of started picking up the broadcast rights for Serie A, so I started watching more games. Of course, from 10 Sports, which was there, it went to Neo Sports, Z Sports, back to ESPN Star, to Sony, JioCinema, and now GXR World. So it's seen a lot of houses, but Serie A has always been there. And eventually, I started also watching, downloading a lot of games from the past. ऑनलाइन में हाइलाइट्स का एक आता था, वो अभी भी है मेरे पास, मेरे हार्ड डिस्क में. आई स्टिल हैव दैट, ऑल द पुराने रोमा हाइलाइट्स ऑफ रैंडम गेम्स. आई मीन इट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम द 1960s. इतना गंदा क्वालिटी है, लेकिन वो है 2000s का, लाइक मिड 2000s का, लाइक 2004, 2005, 2003 रादर. तो वो सब मैंने डाउनलोड किया, एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली वंस द इंटरनेट स्पीड इंक्रीज्ड एंड वी डिस्कवर्ड, I would say, not so awesome streams, जिसके कारण मेरी अरबिक, मेरी रशियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो स्ट्रीम्स में मैचेस देखते थे. एंड slowly and eventually the universe told me that Ajay, you are meant to be a Romanista. And from the 2005 season I have not missed a single game. Like patches में obviously मैं results वगैरह follow करता था, but 2005 से each and every game, not even 2005, I think 2004, in which Roma finished 8th in the league, and in the final day there were a lot of teams that were kind of in that relegation zone,
and despite finishing 8th, the Roma could have been relegated that year. So that is the first year I followed properly, मतलब ऐसा पूरा रिजल्ट वगैरह। तो 2005 से मैं काफी गेम्स देखा उसमें, बिकॉज ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था उस समय पे, एंड उस समय पे थोड़ा इंटरनेट भी बेटर हो गया था। एंड दिस वाज लुचियानो स्पेलेटीज फर्स्ट सीजन इन रोम। सो 2005 से तो मैं एक गेम आज तक मैंने मिस नहीं किया है। उसके पहले आई थिंक 2003 के सीजन में I became a Romanista. So it's been over 20 years since I've been following the club, and I've never looked back. And I'm so happy that the universe, chose this club for me. And sempre Romanista. I'm a Romanista for life now. That's the best decision that I've made. The passion, the joy, and just the happiness that you get by cheering on for Roma, it's unparalleled. I know if my wife is watching this video, she always says that यार अजय तेरा पहला प्यार हमेशा रोमा है, बाकी सब बाद में आता है, पहले रोमा आता है, and that could be true. But anyways, this is the first half of the video, guys. आप intermission लो, जाके popcorn बनाओ, because second half में मैं आपको बताऊंगा how I finally went to Rome. Welcome back after the short intermission. तो यार मैं काफी I've been very lucky that I've been traveling across the world for studies, for visiting, for tourism. I mean exploring places and eventually work as well. But amongst all the European cities that I've been to, Rome is the one city that I had not visited yet because I wanted to be the perfect moment. And शायद मैंने ये गलती की। अगर आप देख रहे हो, अगर आप फैन हो कोई भी अपने यूरोपियन क्लब का, तो go and watch a match ASAP. That's the only advice I can give you because I waited way too long to enjoy that experience. But in 2017, that day finally came. And it was like a pilgrimage. I always say कि ये मेरा pilgrimage था to Rome, to watch Roma, because that is something that I've been wanting to do forever. And obviously आप relate कर पाओगे because अगर आप कोई यूरोपियन टीम को सपोर्ट करते हो तो आपका भी वो एक सबसे बड़ी मन की ख्वाहिश वही है कि जाके मुझे स्टेडियम में मैच देखना है, राइट? सो 2017 में मई में suddenly out of nowhere you had Francesco Totti's retirement rumors, and Spalletti, like the whole Spalletti and Totti incident that happened, and it looked likely that more or less this is going to be his final game out of nowhere because he wanted to continue for one more year. That is when it struck me, यार अगर मैं Francesco Totti को नहीं देखूंगा अपने लाइफ में एक बार at least, it is going to be disastrous. So I started looking for tickets. I started looking for visa application. I wrote an email to the Italian embassy in Mumbai. I told them that please help me out with a visa. मैंने पूरा मेरा स्टोरी लिखा है, I'm a Roma fan, ये वो, because उस समय में अभी मई है तो समर है, जून जुलाई में you find a lot of Indian tourists going to Europe. तो Schengen वीजा जो यूरोपियन वीजा है उसके लिए बहुत ज्यादा वेटिंग होता है। डर का माहौल था मेरे पास में। And after a while Roma and Francesco Totti confirmed that this would be his last season and he would be retiring after the last home game against Genoa. तभी भाई फट के हाथ पे आ गई। I'm like अभी तो करना ही करना है। तो मैंने फॉलो अप किया। Italian embassy replied, आप बिलीव नहीं करोगे, they replied and they said that you can come. मैंने कभी शायद एक ट्यूसडे वेडनेसडे को मेल किया था, उनका रिप्लाई फ्राइडे को आया, you can come on Monday to the Italian consulate and you can do the visa process. मैं जाके फिर तुरंत फ्लाइट टिकट बुक किया इतिहाद का, मुंबई अबू धाबी रोम। एंड एक मेरा दोस्त है श्री जो चेन्नई से था, मैनेज टू कन्विंस हिम कि भाई तू भी आ, लेट्स गो एंड वॉच अ गेम टुगेदर, बिकॉज एज अ रोमा फैन वी हैव अ स्मॉल कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप, वी हैव अ रोमा इंडिया ग्रुप, सो वी हैव अ few fans, and Shri was he still is a very close friend. And of course he and I we've spoken so much together like about Roma. तो मैंने उसको भी बुलाया, but unfortunately उसको वीजा नहीं मिल पाया। Thankfully मुझे वीजा मिला and everything was set. So flight tickets हो गया, वीजा हो गया। This is like mid-May, okay? May 28th is the day that Francesco Totti retired, and 15-16 May को ये सब प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? दिस इज अनबिलीवेबल बिकॉज आपको वीजा मिलेगा ही नहीं जनरली। आई डोंट नो किसने मेरा ईमेल पढ़ा, हु काइंड ऑफ एक्सपेडिटेड माय प्रोसेस, बट इट फेल्ट लाइक द यूनिवर्स वाज ट्राइंग टू पुश मी टू गो टू रोम। बस एक ही चीज रह गया था, विच आर द मैच टिकट्स। अब मैच टिकट्स ऑनलाइन मिला ही नहीं, तो ये मेरा मुंबई मेंटालिटी है कि कोई इशू नहीं है, हम वहां पे जाएंगे और देखेंगे। बट इन द मीन टाइम आई ऑल्सो वॉज राइटिंग टू द क्लब, और
इस चीज में आई वुड वांट टू टेक वन पर्सन's नेम, मिस्टर पॉल रॉजर्स, जो रोमा का सोशल मीडिया गेम ही बदल दिया था. He was so forthcoming. He followed me back. He got me in touch with a couple of officials who look after ticketing. तो मेरे को जब मैं फ्लाइट ले रहा था रोम के लिए, तब मेरे को एक ईमेल आया फ्रॉम द क्लब कि तुम्हारा टिकट्स हो गया है, बस तुमको ऑनलाइन पे करना है एंड यू विल गेट द टिकट. सो एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हेन आई वाज इन द एयरपोर्ट फ्लाइंग टू रोम. सो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रेस था, बट आई वाज लाइक ठीक है, मैं लैंड करूंगा और देखूंगा वहां जाके. एंड मैंने एयरबीएनबी बुक किया था वहां पे, बिकॉज ऑब्वियसली सस्ता टिकाऊ मजेदार. एंड आई बुक्ड इन एन एरिया वेयर विच वाज populated by Roma fans like Trastevere and Testaccio. Testaccio करके तो एक जो एरिया है वहाँ पे पुराना रोमा का स्टेडियम हुआ करता था. And Trastevere is like the art and culture capital of Rome, full of Romanisti and beautiful building. जो भी आपको ये बाईलेन्स ऑफ रोम दिखते हैं ना, वो ट्रस्टावेरे है. बहुत ही सुंदर जगह है. तो मैंने वहाँ बीएनबी बुक किया था. इतना स्ट्रेस में था कि मैंने तो कैब भी बुक किया था फ्रॉम एयरपोर्ट टू ट्रस्टावेरे, बिकॉज आई वाज लाइक भाई क्यों स्ट्रेस लेना है यार. एंड वो कैब ड्राइवर अभी भी मेरे साथ टच में है व्हाट्सएप पे, कि बिकॉज ही वाज आल्सो रोमा फैन, ही इज आल्सो रोमानिस्टा. सो वैसे करके आई रीच रोम, आई रीच माई एयरबीएनबी एंड आई वेंट ऑनलाइन, जो लिंक उन्होंने दिया था क्लब ने, and I booked a ticket. It was a VIP ticket which included wine, food and everything. उसका cost था €90. Just in context, I watched games, Chelsea का games, I watched games in England, the Premier League, and वहाँ पे for a decent ticket you need to pay at least £120 at least. तो ये lower limit पे है. Of course, the higher you pay, the better view you get. But यहाँ पे €90 में I got Francesco Totti's last game का ticket, which included food, drinks and everything. But I didn't care. I mean, I'm just, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ as a price comparison in case you want to compare the price ticket costs of Serie A versus the Premier League or any other league. So in any case, I've reached Rome and I'm like, अब मुझे जाना है Trigoria, which is Roma's training center. तो इस बीच में I was also talking to one of my other friends who's a Romanista called Nandita from India, who's been living in Rome for a while. She did her education and वैसे she also married an Italian Romanista there as well. So I was in touch with them also. और हम लोग तीनों मैं ट्रिगोरिया 2 बार गया. एक बार मैं अकेले गया just to see ट्रिगोरिया. उस समय पे I waited outside for a very long time and I saw the likes of Alisson, Kevin Strootman, Raja Nainggolan, ये सारे players. I got a photo with Alisson and Kevin Strootman, Thomas Vermaelen also. And also I met Luciano Spalletti. So Spalletti came out. I could meet Luciano Spalletti. मैंने Spalletti से हाथ मिलाया और मैंने Spalletti को बोला I am from India. तो Spalletti मुझे बोलता do I look like Gandhi? Do I look like Gandhi? मतलब है वो बुजुर्ग आदमी, but Spalletti was damn sweet back then. And this is Spalletti, okay? This is Spalletti that I watched as a college going child. Like मैं कॉलेज में था एंड मैं रात को रोमा गेम्स देखता था, सुबह को प्रैक्टिकल लैब में जाके सो जाता था. And Luciano Spalletti was the guy who transformed the way that Roma play, and I'm meeting him in person, taking a selfie with him. I mean, was this a dream? I also met Bruno Conti, Roma legend. Got pictures with him also. And I was telling home कि मैं कल यहाँ पे लोखंड वाला में सेल्फी ले रहा था, आज मैं रोम में ब्रूनो कॉन्टी जो एक वर्ल्ड कप विनर है विद इटली एंड रोमा लेजेंड है, उसके साथ में मैं सेल्फी ले रहा हूँ. मतलब pinch me, this can't be real, man. There is no way that this is happening. So I went to Trigoria first अकेले, ये सब हुआ. The second time I went to Trigoria is when I went with Nandita and her husband, and that was Francesco Totti's last training session. ठीक है, तो बहुत सारे fans आए थे उस समय पे. there was some local Italian TV also, and because I could sing Roma Roma, the anthem perfectly, they also took a bite of that and put it on the news channel over there. उसका link है नहीं मेरे पास में, but I did sing the entire Roma anthem in for that news channel. But anyways, बहुत सारे fans थे. फ्रांचेस्को टॉटी का लास्ट ट्रेनिंग सेशन था, वो खत्म हुआ एंड उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला, हम सारे फैंस भागे अंदर एंड वो देयर वाज लाइक दिस, ऑब्वियसली एक प्रोटेक्शन वाला केज था, स्टील केज आप बोल सकते हो,
उसमें लोग ये करे, तो मैं भी, अपन तो मुंबई कर है तो जैसे मुंबई लोकल की आदत है, तो आई वाज वेयरिंग अ टी शर्ट, तो मैं वो टी शर्ट फटाफट चेंज किया मैंने, एक टॉटी का टी शर्ट था, वो मैं जाके वहाँ पे पहुँच गया, एंड टॉटी केम एंड यू नो ही शुक हैंड्स विद एवरीबडी, एंड आई शुक हैंड्स विद हिम, एंड आई वाज लाइक भाई मैं अपना हाथ धोने नहीं वाला हूँ, मैंने टी शर्ट दिया, ही साइंड इट एंड ही गिव इट बैक टू मी, and I have a picture holding it and I framed it eventually and kept it in my wall. इधर है, ऊपर है, जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने रखा हुआ है. So finally, again I do not believe that this happened. I still feel that ये एक simulation था. I met Francesco Totti, shook hands with him and got a signed t-shirt from him. This is my most priceless possession that I have in my house. क्या बोलूँ बस. Eventually मैच डे आ गया एंड आई वेंट टू द स्टेडियम. स्टेडियम रोमा का स्टाडियो ओलंपिको इज अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी. अच्छा, इन बिटवीन दिस आई वाज डूइंग ऑल द टूरिस्टी थिंग्स आल्सो. मैं हर जगह जाके आई वेंट टू वैटिकन सिटी, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आई वेंट टू द कोलोसियम. आई वेंट टू द फ्रांचेस्को टॉटी म्यूरल, जो बहुत आपने देखा रहेगा. दिस इज वेरी पॉपुलर एंड ऑफ कोर्स सिंस दिस वाज अ पिलग्रिमेज आई हैड टू गो देयर एंड यू नो टेक अ पिक्चर. आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं ट्रस्टावेरे और ट्रेस्टाचियो में जो भी कैफे में गया कॉफी पीने के लिए, जिलाटो खाने के लिए, लंच करने के लिए, मैं एक आई वाज़न्ट वेयरिंग अ रोमा जर्सी पर से, बट आई हैड अ रोमा स्कार्फ विथ मी, समथिंग रोमा रिलेटेड. एंड द वेटर्स यूज्ड टू आस्क मी कि आर यू अ रोमानिस्टा, मतलब आर यू अ टूरिस्ट. सो आई सेड या आई एम अ रोमानिस्टा एंड मैं यू नो रोमा इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ. आई कम हियर स्पेसिफिकली टू वॉच Francesco Totti play, and हर जगह पे they gave me a discount. They either gave me a free coffee, a free croissant, or something else. They were so happy. I remember meeting a couple of grandmothers, nonna, and there was this, जहाँ पे मैं रह रहा था Airbnb में, एक बंदा था जो इटालियन काफ़ी फ्लुएंटली बात करता था. अब मेरे को उतना फ्लुएंट आता नहीं, मेरे को तो, मतलब मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे को सिर्फ थोड़े शब्द आते इटालियन में. सो एक मैंने उसको शब्द बोला कि यू नो उल्टीमा पार्टीता दे फ्रांचेस्को टॉटी, लास्ट गेम ऑफ फ्रांचेस्को टॉटी. तो उनको समझा नहीं, बट जो मेरे साथ में जो एयरबीएनबी में जो लड़का था, ही ट्रांसलेटेड यू नो कि ये इंडिया से आया हुआ है. दोज ग्रैंड मदर्स हग्ड मी ब्रो. आई मीन आई कांट बिलीव दैट. अगेन दिस वाज एज इक्वली unreal as all the experiences that I've been having. Luckily, some of them I've captured on film, like I've taken photos of it. काश मैं तभी vlogging करता था, कोई होता था मेरे साथ में. But I think this was the universe telling me this was your pilgrimage, and you know you enjoyed it, which is why I'm so happy that I'm sharing this with you. I think I should probably write a book as well. In case you feel like reading a book about this, leave a comment below. But coming back to the story, so you know ये सब हो रहा था साइड में. Eventually I went to the game, all excited, all alone by the way, and that was another fear कि यार मैं अकेले कैसे मैच देखूंगा. बट ठीक है, मैं गया वहाँ पे excited. I finally sang the Roma anthem. One of the biggest dreams of mine was to sing the Roma, Roma, Roma at the Stadio Olimpico, and finally वो मुझे मौका मिला and it was beautiful. मेरे बगल में there was a father and son sitting with me. Again, I'm still in touch with them. He was so sweet. He recorded everything. He took pictures. And you know, jab Francesco Totti didn't start the game and Roma went down a Pietro Pellegrini goal by Genoa. So very early in the game, Roma were down. And when Edin Dzeko equalized for Roma, we celebrated, like the three of us. We celebrated like we knew each other since forever, and he said that to me as well because उसका English बहुत fluent था. So he told me, यार, you know, I feel that I know you. It's not like you're a complete stranger. And we celebrated, and then Francesco Totti came on for Mo Salah. उसपे भी एक अलग ये था. Finally got him to say, you know, see him play live. And the cherry on the cake was a late winner from Diego Perotti. So imagine 2-2 पे है game. ठीक है, इस पे चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन डिपेंडेंट है एंड डिएगो पेरोटी ने 90th स्टॉपेज टाइम में विनर मारा. यू कांट इमेजिन, द रूफ केम डाउन एंड इट वाज जस्ट क्रेजी. आई लॉस्ट माय वॉइस. आई एम लूजिंग माय वॉइस इन दिस वीडियो, बट दैट नाइट आई लॉस्ट माय वॉइस. सोचो इतना सेलिब्रेट किया एंड आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द लास्ट पीपल टू लीव द स्टेडियम. अच्छा, उसमें भी ये था कि
अपना मुंबई का मेंटालिटी है, तो मैं रुका लास्ट में, नीचे वीवीआईपी सेक्शन था, मैं सुमड़ी में गया नीचे और वीवीआईपी सेक्शन में घुस गया और वहां पे मुझे मिला सिमोने पेरोटा, जो एक वर्ल्ड कप विनर है 2006 बैच के, एंड ऑफ कोर्स अ रोमा लेजेंड, एंड आई कुडंट बिलीव दैट आई मेट हिम। एंड अगेन सिमोने पेरोटा इज born in England, but उसकी English उतनी खास नहीं है, but nevertheless he can fairly understand. So I told him I'm a Roma fan since so long, and you know you've been one of my idols. You're such a humble, hard-working guy, and he was so embarrassed. And मैंने एक फोटो लिया, literally मेरा कैमरा शेक हो रहा था, वो blurry आया, तो फिर मैं वापस गया, तो मैं उसको बोला I'm so sorry, you know this photo, just have a look at this photo, it didn't come properly. So he's like yeah, I will take another photo. And I'm like भाई साहब ये क्या चल रहा है यार, पेरोटा के साथ मैं सेल्फी ले रहा हूँ. So वो मैंने किया, and finally I kind of left the Olympico. मैंने Uber book किया था, and the funny tale here is that जो Uber driver था वो Lazio fan, and he was saying ठीक है यार आज के दिन में even for Lazio fans it is iconic because Totti is an enemy for Lazio, but as someone who is an enemy there's also a great sense of respect. And उसने मेरे को पूछा कि do you want me to switch the AC on or do you want to take you know the air of Rome? I was like खिड़की खाली कर, let me breathe in one last time. Although मैं ट्रेवी फाउंटेन में गया और मैंने वो कॉइन टॉस किया, and there is a myth that says that अगर आपने ये किया हुआ you are guaranteed a return back to Rome. So hopefully 2024 या 25 में मैं रोम दोबारा लौटूं. Took the flight back, and it was pretty amazing. आप बिलीव नहीं करोगे, the last part of the story, which is also a fairy tale, again a Lazio fan who was at the Etihad, Alitalia Etihad counter in Rome, उसने मेरे को एक जुगाड़ बताया कि आप you don't take a seat right now, go to the gate and take it. इसमें दो चीज हो सकता है, either you get सबसे पीछे वाला सीट next to the toilet, or if all the economy is full, they will automatically upgrade you to business class. ठीक है? And she knew that I was a Romanista, because it was very obvious. I was just carrying all the Roma stuff. She said that she's a Laziale, so she said it could go either way. मैं बोला कि ठीक है यार रिस्क ले लेते हैं, क्या है अकेला ही हूँ, अकेला आया हूँ तो लास्ट में बैठ के सो जाऊंगा. But luckily I got an upgrade to business class. I flew business class for free from Rome to Abu Dhabi to Bombay to Mumbai airport, and that was like a perfect ending to a fairy tale. And that's how I finally went to Rome and met Francesco Totti and completed that cycle of, you know, becoming a Roma fan in my teenage years, following the club through all the highs, lows, and low के नीचे जो भी होता है वो भी सब कुछ देख लिया, and eventually going there and experiencing Rome, the city, and the way that the city welcomed me, the way that I could meet so many new people and watch my idols play, the biggest one of them all, the king of Rome, Francesco Totti, for one last time, to see him play. And this probably is one of my life's biggest achievements, or biggest things, dreams that have come true. And I couldn't be more happier, I couldn't be more grateful. And अगर आप यहाँ तक आए हो, so I hope that you've enjoyed this video, and I hope that you also have found your passion, and you can also follow your passion. And trust me guys, आप कुछ भी सोचो, कोई भी सपना हो, it can be the most wildest thing, believe in it and the universe will manifest it for you. This video is the biggest example of this happening. And now for me a new chapter begins as a Roma fan. मुझे काफी कुछ करना है आगे फ्यूचर में, and I hope that I can make another video, all the dreams that I have right now, जो मैं सोच रहा हूँ इस वक्त as a content creator, as a Romanista. I hope that maybe 5-6 years down the line I make a video like this and I give you the story of how all those dreams also came true. Thank you so much for watching. Sempre Dai Roma. Do like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel to support the channel. I'm Ajay Menon. I'll be back with another video sometime soon. Until next time, ciao ciao.